Okay. Thank you, Parekh sir. Thanks, everybody. Thanks for attending this meeting on a Sunday morning. दुनिया में इतना कुछ चल रहा है उसमें we can find time for something other than what is going on in the world. So, Parekh sir asked me to introduce myself. So I've been a professor for a long time and I continue to be a professor. तो जैसे शरीर को आत्मा से अलग नहीं कर सकते हैं, प्रोफेसर को पावर पॉइंट से अलग नहीं कर सकते हैं. So, if you guys don't mind, I have a short PowerPoint here, है ना? If I can find it, तो एक सेकंड है ना? Just give me 1 minute, and I'll try to. अच्छा, इसमें my request is that we बाद में आप अनम्यूट कर देना सर, so that we can have a discussion. मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, excepting this PPT. ये आ गया जी, हाँ. 1 second. So I prepared this short PPT, uh, and I called it Explorations with Friends. So we are all friends. I hope we remain friends. अच्छा देखिए, अब सवाल क्या है? Who was J. Krishnamurti? There are so many biographies. Parekh sir has read them all. I have read them all, etc., etc. But what this man really stood for, what he said. So truth is a pathless land is one of the Mahavakyas, as they say. अच्छा, एक और जो इनका महावाक्य था, द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, एंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टोरी बिहाइंड इट. The only time I had a personal audience with Krishnamurti ji was way back in 1982. I was in a very good job in India. I was a probationary officer with State Bank of India. Deeply unhappy because I didn't like the routine at all. तो उस टाइम पे कृष्णमूर्ति से कृष्णा जी से मेरी वन ऑन वन मीटिंग हुई थी. आई वॉज अ वेरी शाय मैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 27, 28, and I asked him what he meant by the observer is the observed. And he didn't reply. All that he said was find out. It has, I don't know if I have found out after 40 long years, but these two pictures probably sum it up. Here is a man, all of us, we are trying to kill a fly with a swatter. Okay? And we try. Sometimes we kill it, most times we miss. At least I miss most of the time. Okay? Now, what happens if the fly sweats on the swatter? As we see in this second picture, वो जिसको मारने चला था वो खुद ही आके स्वाटर पे बैठ गई. So at this point of time, what is the right action? तो आप भी सोचना इस पे. You are trying to kill a fly with a swatter, okay? You are trying furiously, and you give up, you keep the swatter on the table, and the fly comes and sits on the swatter. What should be the right action? As Krishnamurti always talked about the right action. The right action, interestingly, is not to do anything. Any action will be the wrong action. Are we together on this? Can we agree to this point? That any action will be the wrong action. What does it, what implication does it have for our everyday life? Immense. Whatever we are trying to correct, whatever we are trying to overcome, whatever we are trying to brood over about, etc., etc., there is nothing that we can do about it because we are it. The fly and the swatter are the one. So there is no action which is possible. Agreed, sir, madam? So what is the action? Because life cannot go without action. एक्शन के बिना तो जीवन है ही नहीं.
Bhagavad Gita also says there is no escape from doing. So action has to be there, okay? Logically at least. The only action possible is watchfulness. Just be aware. Be aware that this is so. Be aware that this is so. No need to change anything because we cannot change anything anyway. So let me keep on going. So this is what I asked him in 1982, and it took me a long time to figure it out. Figure it out in the sense not intellectually, but experientially, existentially. Anyway, so let's keep moving if we can. Okay, so these are the things that we have come across. What is the central human problem? Why is all this bullshit going on all over the world? Why? Why? I mean, many people have said, Krishnamurti himself said, life on earth would be paradise only if we could live peacefully. But anyway, the root cause, and this is not theory, this is not conceptual, this is the sense of I, who that I am. Okay, and I am can be both in two different senses anyway. So the I as ego, I as Somendra Pant, who is a tenured professor, professor emeritus at Clarkson University, director of so and so, all that blah blah and blah blah. And once that I acts, and it acts all the time, there is no time when this sense of me does not act. It acts even in our sleep. Even in the sleep, I am there. So how, and you cannot get rid of it just by saying, oh, this is a nuisance. Life will be wonderful if I had no ego, etc., etc. And then wife or the husband walks in or something happens and I springs forward. Okay. So again, going back to this one, the ego exists. It has a evolutionary reason, it has a psychological reason, it has all kinds of reasons to be there. We say competition is bad. Who says competition is bad? If there was no competition, human society wouldn't have been here where it is, in at least in technical terms. Okay, so the point is to distinguish between ego, which is so destructive. I mean, that is obvious, and ego, which serves a purpose, like I have a physical identity, personal identity, etc. and etc. Again, coming back to this analogy, so when the Pant realizes or X realizes that yes, this is the bone of all contention, this is the grandmother of all misery, etc., etc. What do I do? Again, do nothing. There is nothing to do. Only action possible, as we see here, is not to do anything because the slightest action will make the fly move away. And again, we'll be on that wild fly chase. Okay, so do nothing. Okay, do nothing meaning what? Do nothing meaning be intensely aware of what is happening. Anyway, let me keep going. So, since I said I'll make it a experiential thing, okay? Experiential thing is ever since I retired, I never retired, and I don't believe in retirement. There is no retirement. No animal actually retires. No lion retires. No elephant retires. So retirement itself is a misnomer, a little bit of misnomer. Anyway, so post retirement, what I realized was that I am getting bored. Okay, boredom is a very common human experience. Do animals also get bored? Probably they do. Okay, but I can talk about human boredom, which appears as so, and as Krishnamurti was very astute. He was way ahead of his times, and I'll come to that in a minute.
The superficial reason is there is superficial symptoms, there is restlessness, there is anxiety, there is some fear and boredom, and there is a lot of compassion. While I am getting bored, Dr. Parekh is having a good time in Bhavnagar. Right? I don't know what he is going through, and he doesn't know what I am going through. But it's comparison and then self-deprecation. I am no good, I am horrible, etc. But there is a deeper layer to it. The deeper layer to boredom is basically loneliness. Why I don't want to be bored? Because I don't want to be lonely. That is the second level cause. Okay, basically resistance to facing oneself. What happens when we are lonely? The brain has three modes. This is what neurology is saying now. What Krishnamurti said 40 years ago. There is this default mode, all these wild thoughts going back and forth, 60,000 thoughts every day, whatever. Okay. And then there is the task, task network that when you are focused on something, those thoughts stop. But there is a third mode also, which is what neurology is recognizing now. We can call it the awareness mode. They call it the salient mode, whatever we may call it. Moment we are aware of these stray thoughts, okay, and they are not really stray, no thought is stray. We have to understand quite a few things here very, very fundamentally. These thoughts are happening for a reason. If I am comparing myself with Dr. Parekh or if I am doing something, that thought is serving a purpose. The purpose is my survival. What has gone wrong, wrong within quotes, is that now that original survival is no longer an issue. Somebody cuts me off on the road. The same response arises which used to arise 1000 years ago, but now I can't do anything about it. So I better do something about my response, otherwise, this response is going to kill me, not the other person. The person I intend to kill, that is the basic response. I'm not going to do anything to that guy or that girl. Or, okay. So, anyway, so these things are very deep rooted in our so called genes or psyche or whatever. Anyway, Krishnamurti probably was aware, definitely was aware of this genetic factor. Okay, he called it racial memory. He used different terms. But we don't have to go to Krishnamurti. We can see it in ourselves. How much of our genes, how much of our racial memory, how much just the family, which is nothing but an extension of whatever we see there. Anyway, so what neurologists now are recognizing, and this is very interesting, and Krishnamurti's answer to all this conundrum was that brain cells themselves undergo a change. Insight changes the brain cells. It doesn't change brain cells the way we think it changes the brain cells. What awareness does is something very interesting. It changes the wiring of the neuron. The way neurons wire, they fire. जो वायरिंग है, जो पाथवे बना हुआ है, उसी पे वो चलेगा ना. दिस इज इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस टाइम्स immemorial. Firing in a particular way, which ultimate objective being survival. Okay, but if that wiring can be disturbed, then something can happen. Which comes to this last question. Okay, the last level of boredom, which is nothing but loneliness, which is nothing but fear of death, of being nothing. In one of his talks, Krishnamurti made a he and he said, if you look within, what are you? And when he paused, what are you? Nothing.
That's a fact. And you can't argue with facts. This is another one of the beautiful insights, but it has to be my insight, otherwise there's no meaning. Anyway, so now coming to boredom. So this is what I did. I tried everything. Okay. I have been fairly active all my life, continue to be active. But that boredom gave me this opportunity to look at myself. And then boredom came at the right time. Boredom came when I was 70 plus. I turned 71 last June. Uh, so now this boredom, loneliness, and the fear of death all combining together to create a very nice, heady cocktail. Okay. But you look deeper and you find that there is nothing to be worried about. I don't know. Let me just stop here for a minute. So some of these thoughts I captured in a in my poetry book. I don't know if you can see it, but someday if we meet, I'll give you a copy. Tapestry of Mystery. And these are the poems which were actually inspired by Krishnamurti. I met him only once or twice. I was not in the inner circle of Krishnamurti folks. I don't think Dr. Parekh too was there. Dr. Parekh was he was safely removed. Anyway, so now the point is, has it has these insights? So in the poem that I was referring to was is on death. Okay, and there I say death is not an event. It's a process, and it's not an event. It's happening all the time. It is happening right now. This moment gone is gone. So when I don't worry about it, and even if I worry about it, what the hell can I do? Haji Parekh sir, can we do anything? Nothing. Zero, zilch, nada, nothing. Okay. When you can't do anything about something, and this is not just Krishnamurti's insight, this is what I have found for myself. If you don't give up, but when you see that there is no way out, then that is the way out. I don't know. Does it make sense? There is no way out. I have given up. Okay. Not given up in the sense, हाथ खड़े कर दिए. Let me give you another example. It's great to be married. It is wonderful to be single, like Dr. Parekh. Okay. Which one is the lesser evil? I think, and this is one of the things that I said in the slide, but we can get rid of slides now. Another Mahavakya of Krishnamurti is great sentence. Mahavakya. Relationship is the mirror in which you see yourself. Relationship. बड़ी सिंपल सी चीज कही उसने. रिलेशनशिप मीनिंग माय डियर वाइफ अभी है नहीं यहाँ पे. तो sometimes I wonder why can't she see things as I see them? Very simply, why can't she be more like me? Do we all do that? Yes or no? Can we make it interactive? Like, why can't Parekh sir be like me? Or we all have this inner drive that people listen to me. Okay, and maybe it is given to us by nature for a reason. Okay, otherwise our survival would be in jeopardy. Okay, but do I really need it now? It has outlived its men treating women the way they have treated. I mean, right? Do we need to continue?
in the same vein till it is the end? Probably not. So does Krishnamurti provide a ray of hope? We all look for some hope. And I did a lot of research and I said, no, she offers no hope. Zero. Zero. Haji Parekh sir, am I right? In one of the dialogues with Bo, he says, both of them agree that there is nothing left to do. This is like that MIT 1972 report. In 1972, MIT brought out a report called Limits to Growth, and they said in 50 years, Earth's resources would be gone to sustain the current lifestyle. And this is what has happened, right? So in many ways, Krishnamurti was very prophetic. Another area where he was prophetic, and I'm reading that book now, when he talks about computers and artificial intelligence, while these things were more concepts, general AI, generative AI became not general AI, generative AI became generative AI in 2022 when people started using ChatGPT. Krishnamurti was talking about it way ahead of his time. And related concept, related idea which he said, कि what happens to the human being when computers take over? Then we will be nothing but entertainment, pleasure driven species, which is happening. Which is happening. Pleasure is driving, not driving. It is bulldozing our lives. Pleasure from morning till night and even in our dreams. This is unbelievable. I deal with students all the time. Everybody wants to make lot of money as quickly as possible. Why? It is fashionable to make money because their influencers tell them that it is the in thing to make money. And I say, look at me. No, I've made money, but it's nothing great. I mean, it is good to have money, but it doesn't solve your problems. I mean, it may solve a few problems, but not, uh, I don't know. Can we make it interactive? What do people say? My feeling is money is good. Per se, money is in Bible also. If we go by Bible, it's very interesting. Bible doesn't say money is bad. It says the love of money is the root of all evil. Not money per se, but the love of money. And how much is the love of money? I mean, I'm amazed. I'm amazed by the amount of materialism which is there and how it has changed in a short 30, 40 years. And Krishnamurti had the insight to say that this is what it is coming to. So let's say if human beings cannot think, this is what I tell students. If you can do things only with Chat GPT can do, okay, then your job is in danger. Why? Because ChatGPT can do it. Why would Neena hire me to do something which she can do herself by using the same technology which I have access to? And probably she is smarter because she is sitting at in a more senior position, and has more experience than I am, who is a novice to the organization. So her judgment of what she gets out of ChatGPT will be better than mine. So my job is at jeopardy to begin with. Okay. The second argument, which is interesting, is that generative AI will make the society, make the economy so productive that not everybody will have to work, which is also interesting. Now imagine a situation I don't have to work at all. Wonderful, right? But what Krishnamurti was warning against was that when you get to that situation, then it's like a bifurcation in the road. Okay.
Either you go pleasure, 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 more sensations, more sensations, more sensations, okay, or you don't go anywhere, go inward. Actually, what is interesting is after Krishnamurti's death, many people have caught, or some people have caught on to these ideas, and the way they put them is also very interesting. Eckhart Tolle is one guy. I'm sure if you might have read his book. Anyway, the how you earn method and by means is absolutely, sir. How you earn money. So that's why Buddha talked about right livelihood. Right livelihood. Krishnamurti also said the same thing. He was not against earning money. Anyway, so now we come to this fourth. Okay. So one branch goes to entertainment, which is infinite. Hari Anant, Hari Katha Ananta. Okay. Entertainment, pleasure. Why? And pleasure will never find satiation. Why? Because pleasure is related to me, my ego. Just as my ego is never going to be satiated. Okay. That pleasure road is not going to come to a dead end. The other road, which is not a road at all. So what I was trying to say was this guy Rupert Spira. He came up with a nice way of paraphrasing Krishnamurti, or actually, it's not Krishnamurti. This is timeless wisdom, I would say. So he says, supposing I asked you to get up and move towards yourself, where will you go? So I asked Dr. Parekh to get up and move towards himself. Where will he go? And then his answer is very interesting. Any direction will be a wrong direction. Same as truth is a pathless land. So any idea what do we mean by truth is a pathless land? One interpretation is that there is no path which leads to truth, right? It is not the Christian path or the Islamic path. So right now, all those paths are leading to a very horrible truth. What is going on in the Midwest is two different paths. Anyway, now the point is, what is truth in the pathless land? So one interpretation is that this path or that path or that path, and Krishnamurti's would be the way I would interpret. One interpretation of his statement could be that you cannot reach it through any path, and he himself added that in his clarification that you cannot reach it through any guru, etc., etc., etc. But equally significant, in my opinion, is it's a pathless land because there is nowhere to go. भाई आप कहाँ जाए हाँ नो पार्ट टू ट्रैवल नीना जी वेरी गुड एब्सोल्युटली there is nowhere to go, right? Kabir used to say ढाई हाथ का शरीर होता है all of our bodies are 2.5 hands long. अपना हाथ अगर हम अपना लंबा करें तो दिस इज तो एवरीबॉडी इज 2.5, तो बोले ढाई हाथ की काया में सारा ब्रह्मांड है, द होल यूनिवर्स इज देयर, राइट? एनीवे सो अब ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अगर मैंने ये कह दिया सपोज, कहना तो बहुत आसान है. नाउ coming back to that old analogy that I am trying to kill the sword, the fly with the swatter. Fly is my desire, my fear, my anxiety, my boredom. मैं मेरे लिए तो boredom आज की तारीख में सबसे बड़ी problem number one is boredom. Okay, which is related to loneliness, which is related to old age. Why? Because now I compare कि when I was 40 years old, I used to have so much fun. Or 40-year-olds or 30-year-olds are having so much fun. So what I am doing is जो थोड़ा बहुत जिंदगी में खुशी बाकी थी, I am killing it through comparison. Not killing it, I am butchering it.
Aren't we doing that? Everybody is doing it. Marketing का principle, truth is not recurring and repeated, though it appears to be. हाँ, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, आनंद कुलकर्णी। देखिए, कृष्णमूर्ति ने कोई अलग चीज नहीं कही, एंड डॉक्टर पारेख has lot of patience to engage with people in discussions on Facebook. I don't have that kind of patience. मैं वो डिस्कशन देखता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। तो उसका टाइमलेस ट्रूथ था ना, जो भाई नो दाई सेल्फ, तो उसने भी कहा, सोक्रेटिस ने भी कहा, बुद्ध ने भी यही कहा है। अच्छा, मुझे बुद्ध का तो ज्यादा पता नहीं, पतंजलि आई नो लिटिल बिट बिकॉज आई हैव डन अ कोर्स इन योगा, आई एम आल्सो सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। पतंजलि ने बड़े क्लियरली कहा कि 5 क्लेश है। सबसे पहला उसने कहा अविद्या, आई कम टू दैट इन अ मिनट। अविद्या, फिर उसके बाद में अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश, एंड वेरी लॉजिकल। Avidya meaning not knowing who I am, okay, which gives rise to asmita, I am, a false identity, which gives rise to rag, attachment, which gives rise to dvesh, not detachment, aversion, okay, and then finally fear of death. क्योंकि इतना सब, if so much bullshit is going on, you are bound to be afraid of death, right? तो अब तो अब इसको इसको अगर क्योर करना है तो यू कैन नॉट स्टार्ट एट दिस एंड। भाई कॉजेलिटी तो यही कहती है ना, until unless you remove the root cause, बाकी आता रहेगा। If the root of the tree is alive and well, fruits will keep coming. So how to get to that root, who I am? और इसी में आके जो इसने महर्षि ने जो कहा, रमन महर्षि ने जो कहा, और कृष्णमूर्ति ने कहा, इसमें देर आर सम सिमिलरिटीज, सम डिससिमिलरिटीज, डजंट मैटर। व्हाट वर्क्स फॉर us is what works for us. It may have worked for Krishnamurti, it may have worked for Raman Maharshi, it may not have worked for them, but if it works for us, let us do it. रमन महर्षि कहते हैं कि आप, एक थॉट आया तो यू आस्क कि ये थॉट आया किसको। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग बोर्ड, है ना, तो हु इज दिस आई हु इज गेटिंग बोर्ड? वही कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि भाई वॉच योर बोर्डम। तो जब आप बोर्डम को वॉश करते हो, देन यू रियलाइज, एंड इफ यू कम टू दैट पॉइंट, देन बोर्डम गोज अवे फॉर एवर। तो जो कृष्णमूर्ति का स्टेटमेंट है ना, वो बिल्कुल सही है। ही सेज इट विल नॉट कम बैक। डज इट मीन दैट आई विल नॉट गेट बोर्ड? आई विल गेट बोर्ड। अरे भाई, शरीर तो काम करेगा ही, मन काम करेगा, रेस्पॉन्स आएगा ही आएगा। इसलिए वो जो पिछले वाले जो हमारे स्पीकर थे, he said something which is very significant. He said that awareness is of the reaction, कि आपका रिएक्शन क्या था। कोई बोर्डम आई, बोर्डम यानी जो भी थॉट्स आए दिमाग में, और मैंने कहा कि अरे यार, दिस इज बैड, इट शुड नॉट बी सो। सो व्हेन यू आर केपेबल ऑफ हैविंग मोर फन देन व्हाट यू आर हैविंग नाउ, सो व्हेन तेरे पे धिक्कार है कि तू घर पे बैठा हुआ है, कुछ कर, एटलीस्ट बाय कलरफुल शर्ट। वो मैंने खरीद ली। व्हाई डू यू वांट टू लुक ओल्ड, एटलीस्ट कलरफुल शर्ट। तो अपने जीवन में जब हम देखते हैं कि कितनी छोटी 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 चीजें हम कर रहे हैं, which are actually contributing to that ultimate fear, which is the fear of annihilation. All our pursuits of pleasure are nothing but avoidance of the fear of death. Fear of death हटा दो, आपको प्लेजर की जरूरत ही नहीं है। तो फियर ऑफ डेथ जाएगा नहीं ना जी। चलिए, आई हैव स्पोकन इनफ, सॉरी Yeah, आई हैव टेकन मोर टाइम। yeah, हाँ जी, हाँ जी, पारिक सर। yeah. Uh, yes, generally in our this program, a speaker speaks for about 30 to 45 minutes, and then other participants
they express what they feel about the problem. So I think you have said many, many things, and maybe I can say a little for 5, 10 minutes, and then we keep it open to other people. So about these problems of daily living, human beings have many problems. Maybe birds and animals, they don't have many problems because they have instinct for survival and they don't have thinking. But for human beings, we have invented language, and our communication is through language. And once we learn the language and we learn how to speak, how to think, then this thinking becomes almost like a habit, and we are not Yeah. aware. So there is a overthinking when thinking is not required, and the thinking goes on, and then we are not aware of it. So our lot of energy is wasted in uh, uh, unawareness of thinking, and that leads to tiredness, boredom, because of too much mind is extremely active. But I think Mhm. when we learn how to observe, not only the things, generally we are observing the things which are outside, like a tree or a human being or a machine, and our mind is occupied mostly to learn about the things which are outside. But when we become curious to look at turn the attention inward, and is it possible to look at these thoughts and feelings when they are arising, and to look at that, it requires a freedom to look, because generally what happens that the mind just goes on and it is not aware. It's like a mechanical activity. Sometimes I say it is like a rat with a short tail, and it tries to catch its own tail, and not able to catch it, it goes round and round in a mechanical action, and the rat doesn't know that there are people around and they are watching the rat, but the rat is not aware. And then somebody touch the rat, and then the rat escapes, moves in a straight line and escapes. So that kind of touching, when it happens to our own mind, that there is something other than thinking and feeling within us. And when that awareness is awakened, then I think our problems are solved. As you said, nothing to do except watching these thoughts and feelings, and and the thoughts come, feelings come, and nothing is permanent. It comes and goes. So this observation of thinking and feeling, that is the what Krishnamurti's teachings are, that if we can not try to escape from thinking and feeling, not keep involved in some activity to run away from our own self. But when we can, with curiosity, attention, look inward, and then we can really come in direct touch with ourselves. And when we are able to do it, we can minimize a lot of problem, like if somebody says something unpleasant and the anger arises, and if a person is not aware, the person will become very angry and will pick up fight with the other person. There will be a lot of conflict in the relationship. But when there is awareness, then that awareness can look at the arising of anger, and in that looking, that perception, there is an action, and so the anger doesn't multiply, and one can really look at what the other person has said, whether it is true or false. So that is the beauty of this awareness
or intelligence which can look at thoughts and feelings as they are. Once it is awakened, like awakening of intelligence, when it happens, then we don't need to do anything and only observation. And in that, the observer is the observed. In psychological world, you are not separate from anger, but to know that one needs this dimension of intelligence, or one can call it a true self or whatever word we use, because different teachers are using different word for this awareness or intelligence. So our main problem for human being is that awareness or intelligence is not awakened, and so we get lost into problem creating more problems, and it multiplies, and and nobody can solve our problems. Problems created by thinking cannot be solved by thinking. It needs a higher dimension called awareness or intelligence. Once that is awakened, one doesn't need to do anything except watching, observing, and in seeing clearly there is a solution. In that there is no boredom, no tiredness. It is everything becomes very lively. Even to look at the tree or a river, everything is very beautiful. So that is what Krishnamurti's teachings are, that, that there is a dimension within us. And that is why we don't need to go anywhere. Truth is a pathless land because the truth is within us. It's not outside. And for that, we need curiosity, attention, inward looking, and all that quality, sensitivity we need. And then we can see clearly everything. Okay, so I have said enough thing. Maybe we other people would like to make comments on that. Yeah. Thank you. Anyone else would like to Yes, speak? sir, I'd yes, like to, Neena, Yeah, Neena would sorry, like welcome. to. Neena ji. Yeah, go Yeah. ahead. Ji, Somendra ji, thank you so Yeah. much. We are really grateful for this platform to come together, share, and in the spirit of this sharing, there's a deep joy and support for one another. You know, that kind of compassion, the feeling of deep compassion and love. So I just want to convey these beautiful feelings of sharing and coming together in the light of learning with K and so many other, like you said, Patanjali, the genius. He really made it so simple through yamas and niyamas, to experiment with them and find it's all here for us to find out for oneself. So we express deep gratitude for this sharing. Namaskar. My pleasure. Thank you. Yeah. Can I speak now, Kamlesh ji? Yeah, yeah. Yes. Yeah, Dinesh ji. First of all, I would like to say that my observation is nowadays most of the speakers are just repeating the things. But Somendra ji was talking very sensible, and I would request the group to allow him to speak 10-15 minutes more because he was speaking very good. It is not it is his experience and it is his uh, experimentation which has allowed him to talk like that. So I would request that Somendra ji should talk further 10 to 15 minutes minimum, if possible. Thank you. अभी सर, अरे मैं प्रोफेसर आदमी हूँ सर, मुझे 1.25 घंटे का रियाज है. My class time is 75 minutes. I can go on. या प्लीज बट आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं साहब. आजकल के लोग जो है ना सिर्फ कृष्णमूर्ति पढ़ के रिपीट करते हैं या अपना खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसी को मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे साथ ये इसी बात करते हैं.
आप जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी जनरल है, और आपका ऐसा मेरा मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करें थोड़ा सा, एक्सप्रेस अरे योर। सर ऐसा हुआ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, कृष्णमूर्ति जी के चक्कर में मैंने अपना बड़ा अच्छा जॉब छोड़ा। पारेख सर तो कनाडा से आए, मैं एसबीआई में पीओ था। 78 में मैंने ज्वाइन किया, 77 में मैंने कृष्णमूर्ति जी को पढ़ना शुरू किया, 83 में संन्यास हो गया, हम ऋषि वैली चले गए एट द एज ऑफ 28 29। एवरीबडी थॉट आई वाज अ फूल, सो एंड दे वर प्रोबेबली राइट। अब वहां से फिर मैं वापस आया, फिर नए सिरे से यात्रा शुरू की, फिर यूएस चले गए, पीएचडी की, पैसा कमाया, तो बड़े उतार चढ़ाव रहे सब जिंदगी में। पर मैं एक ही चीज याद करता था, तो कहता था देखो तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। ये हमारे जमाने का गाना है ना, तुम ही हाँ, ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना, वो समथिंग समथिंग जान के भुला न देना। और दवा दवा नहीं दे सको तो दुआ तो देना। हाँ, मैंने कहा ये कृष्णमूर्ति जी मुझे इस पचड़े में लेके आए हैं, सेल्फ अवेयरनेस फलाना ढिमका, अरे स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लीजर, और मैं यहाँ पे मरा पड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा इसी में कोई रास्ता निकलेगा जी। भाई, भगवत गीता में अगर आप भगवत गीता का पहला अध्याय देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इधर कौरव खड़े हैं, उधर पांडव खड़े हुए हैं, वो दुंदुभी बज रही है, डग 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 नगाड़े बज रहे हैं। वो कहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार रख दिए। अगर उस उनके सारथी बुद्ध होते तो कहते बहुत अच्छा बेटा, युद्ध मत कर, घर जा। वो उल्टा बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, युद्ध कर, युद्ध कर। युद्ध क्यों कर, क्योंकि युद्ध तो रोज ही चल रहा है। रोज मेरी बीवी मुझे हड़का रही है, रोज मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, रोज मेरा पड़ोसी कुछ कह रहा है, रोज मेरा बॉस कुछ कह रहा है, रोज मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, रोज मेरी बीवी, तो युद्ध तो चल ही रहा है ना। हाँ, बिल्कुल तो सही। ये बड़ी अच्छी चीजें बताई हैं इधर हमारे यहाँ। मुझे ऐसा लगता है बाकी रिलीजन्स में भी होंगी, क्रिश्चियनिटी में बड़ी अच्छी चीजें हैं, पर वो उसको अलग तरीके से हमने कर दिया जी। तो पॉइंट ये है सर कि ऑर्गेनाइज रिलीजन के अगेंस्ट जो कृष्णमूर्ति जी ने कहा है, वो अगर आप एक्सपीरियंशियली देखें तो काफी हद तक सही है ना, जो चल रहा है अभी, जो स्टार वॉर चल रहे हैं ये। ही हैड अ फोरसाइट, but he was also very pessimistic सर। पारिक सर, मुझे ये नहीं समझ में आता, कृष्णमूर्ति जी के हिसाब से तो कोई उम्मीद बची नहीं, कोई उम्मीद पर नजर नहीं आती, कोई सूरत पर नजर नहीं आती, है ना। कयामत का एक दिन मुकर्रर, नींद क्यों रात भर नहीं नहीं, आती। देखिए सर, मेरा व्यूज बहुत क्लियर है। ये इतिहास गवाह है कि राम आए, कृष्ण आए, कृष्णमूर्ति आए, बुद्ध आए, दुनिया तो ऐसे ही चलना है। नहीं तो आपको ये क्या है। देखना है, जैसे आपने बहुत सही कहा, कि आप पे क्या लागू होता है। हो सकता है कृष्णमूर्ति लागू नहीं हो, रमन महर्षि लागू नहीं हो, या जो भी है। दूसरे लोग एनिमल की बात करते हैं, एनिमल के थॉट्स और इसकी, और हमको ये विचार दिए। तो अरे, ये इज इट अ बोन? थॉट इज अ बोन और इज अ कर्स? उसको ये ओवर यूज इट्स कर दिया ना सर। हाँ, जितनी हाँ, जरूरत है उतना यूज करो। हाँ। तो ये विजडम कहाँ से आएगी? तो उसकी बात करें ना अपन। अब वो एक बार कंपेयर कर रहे हो आप एनिमल से। एनिमल में क्या है यार? एनिमल तो भोग योनि है। आप तो कर्म योनि भी हो। ट्रम्प चाहे तो अभी युद्ध रोक सकता है, पर नहीं रोक रहा है। एक बार कृष्णमूर्ति जी की एक टॉक चल रही थी दिल्ली में, तो Q&A होते हैं ना उसके बाद में, तो किसी ने पूछा कृष्णा जी हाउ कैन वी बी थॉटलेस, वो जोर से हंसे। आई स्टिल रिमेम्बर दैट टॉक, हाउ कैन वी बी थॉटलेस। अरे भाई, इंडिया में वी आर ऑलरेडी थॉटलेस, हाउ कैन वी बी थॉटफुल शुड बी ए मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। वही जो पारिक सर ने कहा ना सर कि राइट प्लेस ऑफ थॉट, वो तो वो है नहीं। अच्छा, वो आउटसोर्स कर दी हमने, जो थोड़ी बहुत थिंकिंग कैपेबिलिटी ह्यूमन बीइंग्स में है, या वो बहुत है एक्चुअली, कम नहीं अरे है। वो तो एआई तक जाएगी साहब, अभी रुको तो सही आप। अरे सर आप देखो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज चैट जीपीटी, आई यूज इट ऑल द टाइम, एंड आई टेल स्टूडेंट दैट इफ यू हैव टू क्रिएट हार्डवेयर इक्वल टू चैट जीपीटी, ये पूरी बिल्डिंग हमारी भर जाएगी, वहाँ की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एंड इट विल कंज्यूम सो मच पावर के आसपास के शहरों में अंधेरा हो जाएगा। एंड दिस चैट जीपीटी वर्क्स इन अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेस एंड टेक्स ओनली 600 milliwatts of energy,
तो इसको यूज करें ना हम। बिफोर वी यूज चैट जीपीटी, व्हाई डोंट वी यूज हैड जीपीटी एज आई कॉल इट? अपना अपना दिमाग यूज करो ना यार। सही अपना बात है। अपना दिमाग यूज नहीं कर। तो सबको वो शॉर्टकट रेडीमेड चाहिए सर। नहीं नहीं, पर वो जो कृष्णमूर्ति जी का क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट विल इट डू टू द ह्यूमन ब्रेन, विल ह्यूमन ब्रेन एट्रोफी? भाई उसने दो रास्ते बताए ना, कि एक तो एंटरटेनमेंट का रास्ता है, प्लेजर एड इन्फिनिटम, है ना, उस पे चल जाओ। या दूसरा ये है कि गो इनवर्ड, अपनी अपने अंदर जाके देखो ना आप कि भाई ये है क्या, तो अब किस तरफ जा रही है दुनिया आपके हिसाब से? मेरे ख्याल में तो प्लेजर प्लेजर प्लेजर। अरे यार, हमारे इंदौर में, इंदौर, all of us are from Indore. We have seen Indore change right before our eyes. It's a fun city now. तो कितनी कितनी चीजें बदल गई ना, हमारे सामने ही बदल गई। तो किस डायरेक्शन में ह्यूमन बीइंग जा रहे हैं ये तो साफ दिख ही रहा है, मेरे ख्याल में तो दिख रहा है। नथिंग टू बी प्राउड अबाउट इन माय ओपिनियन। जी पारिक सर, इज देयर एनीथिंग टू बी प्राउड अबाउट? ऑफ कोर्स वी हैव जूम। जूम नहीं होता तो इतने सारे लोग मिलते नहीं ना। बट ओवरऑल मुझे ये लगता है कि दुनिया बड़ी विचित्र मोड़ से जा रही है जी। सही बात, सही बट कह रहे सर। है सही कह रहे, मेरे को भी यही लग रहा है। इट्स यार, वेरी। मेरा तो ऐसा अच्छा है कि भाई आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीबॉडी। मैं मर गया, मेरी बीवी मर गई, खेल कर सब पैदा आ जाओ। और एक कबीर का दोहा है बड़ा अच्छा, जा मरने से जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं और पाइयूं पूर्ण परम आनंद। तो वो भी इंतजार कर रहा है कि कब ये। अच्छा, दूसरा बड़ा अच्छा है, मरना है तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, मरना है तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, ऐसा मरना क्यों मरे दिन में सौ सौ बार। भाई दिन में सौ सौ बार आदमी मर रहा है, तो इससे तो अच्छा है एक बार खेल खत्म हो जाए, है ना। आई डोंट नो इफ एनीबडी हियर हैड नियर डेथ एक्सपीरियंस। मेरा मुझे दो बार हुआ है, एनडीए बोलते हैं ना, जो एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंस। आई हैड देम ट्वाइस। कोई बुरी चीज नहीं है जी, छूट पड़े जंजार। बट वी आर ऑल, वो अभिनिवेश जो उसने बताया है पतंजलि ने, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है जी वो। और इसी को ये मॉडर्न साइकोलॉजी आगे लेके बढ़ाया है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि दैट थॉट स्टॉप देयर। उसने जो थैमाटॉस और उसकी बात की है ना, जो लिबिडो, एंड उसका जो ऑपोजिट है डेथ विश, वो डेथ विश भी है हमारे में। कृष्णमूर्ति का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, वो कई बार मैं सोचता हूँ उस बारे में, वो क्या कहते हैं, what he meant by it, I haven't got an answer. He says, whenever you walk on this path, whatever path it is, when there is, it's a pathless land and there is no path. तो जब इस पाथ पे आप होते हो, evil is one step behind you. I don't know what he meant by it. Evil is one step behind you. I don't know what he meant by it. पर चलो जो भी whatever he meant by it, इट इज अ फैक्ट कि अगर जो हो रहा है दुनिया में वो इविल है, तो इविल वन स्टेप बिहाइंड ही वन स्टेप अहेड है। नहीं है जी, वन स्टेप बिहाइंड होता तो भाग लेते कहीं, अभी तो आगे चल रहा है जी। पर ये, डज दैट बॉदर यू? इट बॉदर्स मी समटाइम, देन आई से। एक मैंने कहीं पढ़ा था बहुत अच्छा, वो उसमें ये था कि भाई, वेन एवर इन डाउट ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? इज इट इम्पोर्टेंट? डू आई हैव कंट्रोल ओवर? If answer to any one of these questions is no, then let it go. Important तो है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पे, लेट इट गो। मेरा कंट्रोल है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको भी जाने दो। शुड आई ऑर्डर अनदर पिज्जा? नो, आई शुड।
वो सर मेरा तो कहना है क्वेश्चन आना ही क्यों चाहिए? है। why we should go for reaction any sort of. हाँ हाँ, वही जो पारिक सर ने बात कही वो बड़ी अच्छी है ना कि अभी एक अभी एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने विच इज रियली माइंड बॉगलिंग। वो उसका मैं सपोज आई आई शेयर द लिंक कि भाई जो अवेयरनेस होती है वो आपके वॉल्यूशन से पहले हो जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप हाथ उठाओ तो अपना हाथ उठाना ये न्यूरोमस्कुलर एक्ट है। पर इसके पहले एक अवेयरनेस थी जो कहती थी कि अब सिग्नल आएगा हाथ उठाना है। सही है अच्छा, सर। अब पर ये फंक्शनल एमआरआई वगैरह करके वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोजिंग दैट इज ट्रू, है ना। अब इसको इसी को लॉजिक को हम और एक्सटेंड करें, है ना, कि भाई अवेयरनेस पहले हो गई। मान लो मेरे हाथ में मच्छर आके बैठा, मैंने उसको पट्ट करके मार दिया, तो वो जो एक्शन है उसकी अवेयरनेस पहले हो गई थी। इसका मतलब मच्छर का वहां बैठना तय था। नहीं तो वहां ये एक्शन क्यों होता? तो तुलसीदास जी ने सिंपल शब्दों में कहा, होई सोई जो राम रची राखा, वो करी तर्क बढ़ाई पढ़वई है शाखा। सर अपने ट्रेडिशन में है। इसको चैत्य पुरुष कहा है, मतलब चित्त चित्त जो है, जो एनर्जी है, एनर्जी बॉडी जो है आपकी, बेस बेस एनर्जी बॉडी जो है वो चैत्य पुरुष है आपका, जहाँ जहाँ से ये सब ऑपरेट हो रहा है। यार उसका मुझे कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है ना, मुझे हम्म, तो क्रॉस का भी पूरा पूरा नहीं हो पाता। पर एक चीज मैंने देखी है, अगर ब्रेन को आप ध्यान से देखो, वो वही कर रहा है जो उसको करना है। भाई जैसे आपका लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, कभी नोबडी सेज कि आई एम मेकिंग माय हार्ट बीट। ऑन द अदर हैंड योर हार्ट इज मेकिंग यू बीट। तुम तो ये चलाए मान रखे, तूने क्या हार्ट को चलाया? वैसे ही ब्रेन का है, वो अपना काम किए जा रहा है। वाई शुड वी इंटरफियर विद इट? तो ये सारा मेडिटेशन वगैरह जो है, माइंडफुलनेस, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, इंटरवल बिटवीन थॉट्स, ये वो इसकी क्या अहमियत है? मैं खुद करता हूँ। मैं सुबह 1.5 2 घंटे में प्राणायाम नहीं करता इसकी हूँ, सर रोज करता मेरे हूँ, सालों से कर रहा हूँ। है। मेरी नज, मेरी नज़रों में इसकी अहमियत सिर्फ इतनी है कि आप जान लो कि है। आप फ्री हो, एक्चुअली बेसिकली आप फ्री हो, ये सब आपने ओढ़ा हुआ है, एक ये अब सब जो चीजें जो मेरी है आपने मेरी ओढ़ी हुई है। देखो मैडम ने बड़ा अच्छा कहा था ना, यम नियम। हम्म, अगर आप इसी अष्टांग योग को देखो, उसके बाद में आसन, हम्म। फिर प्राणायाम, है ना। तो एक सीक्वेंस बताइए, बुद्ध ने भी बताई है भाई, थोड़ा सा अपनी लाइफ को तो बैलेंस रखना। कोई ब्रह्म, अच्छा, एक एक हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण है, ऊंची धोती वाला है, छोटी धोती वाला है, लंगोट वाला है, कैसा ब्राह्मण है? हु द हेल केयर? ब्राह्मण क्या है पहले आप इसका तो पता कर लो ना। ब्राह्मण यानी जो थोड़ा बड़ी चीज की तलाश में गया हुआ है, जो ब्रह्म की तलाश में गया हुआ है। बड़ी चीज तूने क्या तलाशी भाई? अगला प्रमोशन क्या होगा? एमएनसी में काम करूँ कि टीएनसी में काम करूँ कि नहीं करूँ? कितने कितने सीआर इनफ हैं? मेरे पड़ोसी के पास कितने सीआर हैं? उसके कितने अफेयर चले, मेरे कितने चले? वो इम्पोर्टेंट क्या है सर? ये दैट इज अनम्यूट कर लीजिए सर। एक बड़ा सोमेंद्र जी अच्छा अनम्यूट। शेर एक बड़ा अच्छा शेर पढ़ा, वो अप्लाइज टू पारेख सर एंड अप्लाइज टू मी ऑल्सो। उनको कामयाबी में सुकून दिखा, वो दौड़ते चले गए। उनको कामयाबी में सुकून दिखा, वो दौड़ते चले गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी, हम ठहर गए। जस्ट बी पीसफुल, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? नहीं, मैं तो आई डील विद यंग फोक्स ऑल द टाइम, सर यू आर लकी, यू है, आपके पास इतना पैसा है। मैंने कहा भाई वो पैसे का कोई मतलब नहीं है। देखिए सर,
मेरे व्यूज ऐसे हैं कि जो आपकी एनर्जी है ना, जैसी हाँ, चलती है वैसे आप बोलते बात करने लगते हो। अगर यंग एज में बिल्कुल। हो तो आप उसको एंजॉय करोगे, और बुढ़ापे में फिर आप बोलोगे यार कि यार बोर हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ वगैरह, सब प्रॉब्लम्स आपके रहेंगी। हम्म। So it is directly relation to proportional to the your energy content, or the behavior of the energy. Simple. रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये मैं नहीं कह रहा, कबीरदास कह रहे। तो इवन ही मस्ट हम्म। हैव फेल्ट कि भाई समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, ऐसे ही नानक का है, वो नानक दुखिया सब संसार। आई वर्क फॉर अ सिख ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे जगह जगह लिखा हुआ है नानक दुखिया सब संसार। मैंने कहा यार देखो, 250 500 साल पहले भी इसको आइडिया था कि द वर्ल्ड इज नॉट अ वेरी हैप्पी प्लेस। अब भी वही है। This perception varies from time to time, na sir, in our life. यार कोई कोई बता दो आप मुझे, दिनेश जी, कोई ऐसा फिलोसफर हो, कोई हो जो कहता हो कि सब ठीक चल रहा है। कोई एक नहीं कहता, कृष्णमूर्ति हो कि जितने भी हैं। फिलोसोफर सर वही बनता है जिसको ये सब समस्याएं दिखती है। कृष्ण तो ऐसा कभी नहीं कहते, कृष्ण नहीं कहते कृष्ण ऐसा। तो, भाई कृष्ण को उस जमाने में बड़ी प्रॉब्लम थी। भगवत गीता के हाँ जमाने में भी जो जो कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया वो ये था कि कर्म कर, कर्मकांड मत कर। भाई कर्म, कर्म, नथिंग रॉन्ग विद कर्म। बोले मैं भी करता हूँ, सुबह से शाम तक सूरज चल रहा है, प्रकृति चली रही है ना। लेकिन कर्म कांड बिकमिंग ए सब्स्टिट्यूट फॉर राइट एक्शन, दैट इज व्हाट ही ऑब्जेक्टेड टू। दिस इज माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग। कर्मकांड तो सर सिर्फ एनर्जी एनहेंस करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी, हाँ बाकी हाँ, कुछ नहीं। वो तो रिचुअल थे ना सर, ये दयानंद सरस्वती ने बाद में यही किया। तो एक मूवमेंट था, एक तरीके का सोशल मूवमेंट कह लो, रिलीजियस मूवमेंट कह लो, जो भी कह लो, पर था। सर देखो ये सब है ना इंडिविजुअल के व्यूज हैं। अगर आप मंदिर में जाके बैठोगे जहाँ बहुत सारा रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं, तो वहाँ यू विल फाइंड दैट आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वही अगर आप दारू खाने में या और कहीं जाके बैठोगे तो आपको खराब लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो एनर्जी वहाँ पे वैसी है। ऑफिस में जाते हो तो काम करने की इच्छा होती है, घर में वही वर्क फ्रॉम होम में हम लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाते थे क्योंकि वातावरण चलो वैसा नहीं ठीक है। ठीक, ठीक बात है। जैसे मैं ये बेडरूम में वैज्ञानिक, जाऊंगा तो मेरे को नींद आने लग जाएगी, अगर मैं रसोई घर में बैठा रहूंगा तो सो नहीं सकता। ये आपने जो अभी कहा ना कि दारू खाने में बैठ के कुछ और बातें करेंगे, इस पे एक बड़ा अच्छा शेर है सर। क्या होगा उनके हाथ में मैकले, क्या होगा उनके हाथ में पैगा, जामे पैगाम, जो मैकदे में बैठकर गम की बात करते। मैकदे का भी अपना कुछ यूज है सर। यस। चक्कर ये है ना कि मैकदे ज्यादा हो गए। इंदौर में एक लाइब्रेरी होती थी, दो लाइब्रेरी होती थी, तीन होती थी, कितनी होती थी मुझे नहीं पता, पर किताबें मिल जाती थी। किताब ढूंढने के लिए आपको बड़ा एफर्ट करना पड़ता है, दारू की दुकान ढूंढने के लिए बहुत कम एफर्ट करना पड़ता है। इज इट अ साइन ऑफ प्रोग्रेस और रेट्रोग्रेड साइन? इट्स दारू लॉबी सिंपल में, मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सर। बस सर, बिल्कुल यू गॉट इट सर, एब्सोल्युटली राइट। डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज की डिमांड है वो सप्लाई हो रही है, तो डिमांड का है कि ये दारू की है, किताबों की नहीं है। दारू की डिमांड क्यों है? नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन ये है ना। तो आपने आपने पहले ही बोल दिया था ना। क्या? प्लेजर, प्लेजर और जो प्लेजर, प्लेजर। इनकम प्लेजर, का वो इन्फिनिट होगा प्लेजर तो। सर। अरे यार, मैं बस 91 में मैं यूएस गया, तो तब भी मुझे लगता था कि थोड़ी यानी सर्टन थिंग्स वेयर बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। अभी मेरा इंदौर में एक हमारे मित्र की हमारे मित्र की वाइफ है, वो किसी मैनेजमेंट स्कूल में है, सो शी इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट स्पीकर। वो लड़का लड़की के गले में हाथ लग के ऐसे बैठा हुआ है, बड़ी महफिल में 100 लोग बैठे बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार, पहले मुझे लगा कि भाई ये तो अमेरिका में भी मैं होता तो शायद टॉलरेट नहीं करता,
कि भाई क्लास में लड़का लड़की के गले में हाथ डाल के बैठा है, तो मैंने कहा इनकी एचओडी को नहीं प्रॉब्लम है, उसको नहीं प्रॉब्लम है, लड़की को नहीं प्रॉब्लम है, तो व्हाई द हेल शुड आई वरी, है ना? एवरीबडी इज हैविंग अ गुड टाइम। यार पता नहीं, आई डोंट नो कितनी तरक्की है, कितना रेट्रोग्रेड गए हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर अगर कृष्णमूर्ति को ध्यान से पढ़ो तो वो कहते हैं कि हर चीज में डिटीरिएशन है। सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, वो उनके पास एक महिला मिलने गई, वो बड़ा अच्छा है। वो पारिक सर को पता होगा, टैम टैम ब्रैम्स की, यानी खालिद ब्राह्मण जो टैम ब्रैम्स हैं, वो कृष्णमूर्ति को बता रही है, दिस यंग जनरेशन दे ड्रिंक एंड दे डू दिस एंड दैट, एंड शी वाज सैड एंड कृष्णमूर्ति वाज सैड। यानी भाई सैडनेस तो है ना एक तरीके की। तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कुछ है कि नहीं है, गॉड अलोन नोज। अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये अभी इंदौर में डिमांड आई थी, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, मैंने पेपर में पढ़ा था कि देयर शुड बी ए सेपरेट दारू की दुकान फॉर women, बिकॉज व्हेन दे गो टू कॉमन दारू दुकान दे फील इंटिमिडेटेड, या टॉन्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक तरीके से तो तरक्की का साइन है, एक तरीके से नहीं है। हु आर वी टू डिसाइड, है जी? यार बाकी बाकी लोग भी Yes, बताए sir. ना, तब तो कुछ कुछ मजा आएगा जी। तो ये मेरा परसेप्शन है जी, आई मे बी रॉन्ग। हम्म। आई मीन आई होल्ड एवरी राइट टू बी रॉन्ग। मुझे तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई तरक्की नहीं दिखती। ठीक है, हमने वेस्ट को फॉलो कर लिया है, पर अंदर जो ईस्ट बैठा हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है भाई। नॉट एवरीथिंग दैट केम आउट ऑफ ईस्ट वाज सुपरस्टिशियस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो कभी मैं पारेख सर को भेजूंगा, ही विल शेयर इट विद यू। एक ब्रिटिश स्कॉलर आया है इंडिया में, उसने कहा कि भाई अब मैं इंडिया में हुई तो थोड़ा सा मैं वेद वगैरह पढ़ लेता हूँ। तो पंडित के पास पंडित ने कहा भाई चलो ठीक है, मैं तुझे वेदा दिया जो भी है सिखा दूंगा। तो ही स्टार्टेड ऑफ सेइंग ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो अंग्रेज कहता है, बोले दिस इज नॉनसेंस, उसने पढ़ना बंद कर दिया। तो दयानंद सरस्वती ने 17 पेज का उस पे ऐसे लिखा है, उस एक श्लोक पे। अगर आपको कृष्णमूर्ति का द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व समझना है, तो वो वाला श्लोक जो है, जो मुझे समझ में आया, वो बड़ा बड़ा सटीक श्लोक है। इधर भी वही है, उधर भी वही है। पूर्ण से पूर्ण की रचना हुई, पूर्ण जब चला जाएगा तो पूर्ण नहीं बचेगा। हम्म। वंडरफुल, हाउ डज इट अफेक्ट माई डेली लाइफ? है जी पारिक सर? पूर्ण नहीं बचेगा तो मेरी जिंदगी में उससे क्या फर्क पड़ा? हम्म। है जी पारिक सर? Yeah, I like to लेजिटिमेट, say, yeah, I हाँ like to say लेजिटिमेट that, क्वेश्चन। yeah, very few people are able to get interested in Krishnamurti. Even in Krishnamurti schools, students find it very difficult because it requires some kind of quality to look inner instead of looking at the words or the outside object. That is, students have a good intellect. They can solve mathematics problem. They can do science very good in science, politics, social, lawyer. All these students have a good intellect. But to understand Krishnamurti, the depth of it, one has to stop thinking and looking inward. And that is where the source of all our problems are within us only. This ego, which you started, this I or me, that I or me, from where does it come? It comes from thinking. So, as long as people are not interested
in looking inner at the source from where these problems are arising, then Krishnamurti will be very confusing, it will not help. So I think very, very few people are interested in Krishnamurti because they cannot be alone, silent, turn attention inward and look at the source from where all our problems start. And so our topic here is Krishnamurti in daily living. And in this our daily living, there are many, many problems, and the greatest problem is the problem of relationship, whether it's in the family or in the office or everywhere. So that relationship is the relationship of conflict, observer and the observed. But Krishnamurti is talking about a relationship which is not based on images, it's not based on thinking. So that is something extraordinary, beautiful, what Krishnamurti is saying. But it will not be useful if we are not really able to look deeper within ourselves, clearly through the dimension of awareness, not thinking. So that is the difficulty, that Krishnamurti is not understood by most people. It's because there is no awakening of awareness to see clearly how problems are arising. So I think that is the difficulty. I think Dr. Kulkarni and Ravi Kaushal are Yes, sir. waiting for it. Yeah, Yes, sir. right. Yeah. Mm. First of all, thank you, sir. Just I wanted to share a view, as you said. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कृष्णमूर्ति जी 10 जगह 10 सेम चीज को डिफरेंट तरीके से समझाते हैं। जैसे आपने कहा कि थॉट, अब थॉटफुल बनो। दूसरी जगह बोलते हैं थॉट विल कॉज डिस्टॉर्शन, ईच एंड इट ऑलवेज कैरीज द पास्ट नोन। सो डिफरेंट मीनिंग होता है। But what I found, why we are unable to follow Krishnamurti ji, which is told by Adi Shankara himself, was this. Actual meaning of thought itself is like it's a sensual pleasure. You बहुत अच्छा आपने समझाया। जो ठीक हम ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण क्या है, सो डिस्टॉर्शन एंड इल्यूजन इतना ज़्यादा हो जाता है, उसको ही वीक माइंड कहते हैं। दूसरा द सेंसुअल प्लेजर्स। एंड मैं कल एक ऐसे कृष्णमूर्ति जी का क्लास चल रहा था अवेयरनेस के ऊपर, तो सडनली ही वाज टेलिंग डोंट डू इंक्वायरी, स्टार्ट पेनेट्रेटिंग। जैसा अभी आप दोनों ने कहा, हर्षद जी और आपने, even don't look also because you have prejudices, senses involved, the thought process. तो पेनेट्रेशन तभी हो सकता है जब हम खाली है। जैसा आपने पूर्णमदः पूर्णमिदम का बताया, जब तक हम खाली नहीं हैं या सब लोगों का व्यूज बोल रहे हैं लेकिन अपना ओन व्यू एक भी नहीं है, तो मैं खुद का देख नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं इधर बैठा हूँ जो मैं बेस्ट आदमी हूँ या बहुत सच्चाई से हूँ, लेकिन जैसे ही जूम खत्म हो जाएगा मेरा चीज़ बाहर आ जाएगा। सो वेरी सरप्राइज। अगर सिंसियरली फॉलो करते हैं, सभी मास्टर्स ने कहा है कि ग्रेटेस्ट साधना इज नॉट डूइंग सेल्फ डिसेप्शन। कृष्णमूर्ति जी ने बहुत कहा है, एंड हम बहुत कम इसको फॉलो करते हैं, सेल्फ डिसेप्शन करते हैं, ट्रूथफुल नहीं है। अभी सब लोगों ने, बहुत सारे लोग इधर आए हैं एज ए स्पीकर, बट आपने जितना क्लैरिटी के साथ रखा है, ऐसे चीज मुझे अभी समझ में नहीं आया। आप और एक चीज रखे थे ना, जितना इसको इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं उतना डिस्प्रूव या नेगेटिव होता है। दिस कॉल्ड एंथैल्पी और एंट्रोपी इन फिजिक्स। सो कोई भी चीज मैं अच्छा बनने के लिए जितना ट्राई करूंगा उतना मेरी बुराइयां बढ़ती है। आपने बताया इट्स ग्रेटेस्ट मिस्ट्री एंड ट्रुथ एज वेल। लेकिन हम उस बुराई को ही अच्छे रूप में बदलने की ट्राई कर रहे हैं, पास्ट को ही फिर प्रेजेंट और फ्यूचर बना रहे हैं और फ्यूचर को प्रेजेंट बना रहे हैं। ऐसा एक साइकिल चलता है। और ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर सीइंग पार्शियली। जैसा अभी पहले किसी ने कहा कि कृष्ण जी ने गीता में नहीं कहा संसारम दुखालय अशाश्वतम, एक श्लोक ही आता है। तो ये दुखालय ही है, बनाया गया ऐसा है कि इस तरफ से मुड़ के परम सुख की तरफ हम आ जाए।
हाँ, कौन सब से कुछ है, कौन से लेकिन में? हम देखते नहीं है और बोलते कि उन्होंने नहीं कहा. सो आई एम नॉट टेलिंग दैट आई एम राइट और यू आर रॉन्ग, बट द होलिस्टिक व्यू मिलना जो है, हम थोड़ा ही देखते हैं और ओनली ओपिनियन और व्यूज में ही रह जाते हैं, तो ओरिजिनल चीज छूट जाती है. ये बात है. थैंक यू सर. नहीं, थैंक यू सर। हाँ, रवि जी, वैसे दुखालय ये किसी और ने भी कहा है, पर आई आई हैव स्लाइटली डिफरेंट व्यू। दुखालय है तो है यार, अब क्या करोगे उसमें? थिंकिंग करेंगे तो सर, अगर है? जैसा अभी और एक चीज भी कृष्णमूर्ति जी ने कहा है. सो हम जो भी डेली करते हैं या थॉट में, एक एसेंशियल चीज है जो थॉट्स के पीछे है, उधर हम नहीं देख रहे हैं. See, thought हाँ, वो has ठीक है। ability to understand itself, which we have never gone. वो उसको सबकॉन्शियस थॉट या सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो सपने में होता है या सडनली आ जाता है. आपने जैसा कहा, सडनली हम एक करने जाते हैं दूसरा हो जाता है, तब सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस इज वर्किंग. लेकिन हम जो सुबह से रात तक हर एक थॉट का अवेयरनेस करते हैं, तो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बैकग्राउंड एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रहता. अब क्लैरिटी के साथ हर एक चीज कर रहे हैं, तो उसको चलो, और एक आपकी भी. बात ठीक है। जी. मान लीजिए मैं कोमा में हूँ, सपोजिंग आई एम इन कोमा जी. फॉर जी. नेक्स्ट 5 years, 10 years. Does the Iran war exist for me? It doesn't. ठीक है ना? तो जी. कोमाटोज होने की बात तो नहीं कही उन्होंने। हाँ जी, रवि जी। Yes, sir. Yes, sir. Am I audible, sir? यस सर, रवि कौशल। Yes, sir. Yes. हाँ Okay. जी। So I've heard was Harshad Parekh, sir, and we talked as usual, we talk good and about all awareness and all that. But and then Dinesh Waghmare is actually first I would like to say that this talk is a bit going on in the direction of a philosophical talk. It's kind of it's also kind of self deception. See, then you're not serious about the question in the topic. So this one thing I see, of course, what Somendra sir has said, it's a beautiful thing, beautiful shayari and beautiful all that, but it has lost something, a spark, a seriousness. It has lost. I feel that. Maybe I'm wrong. So this is one thing I see. And one good question of current issue, Dinesh Waghmare, is that if Trump wants to stop the war, why are not we talking about the war? This is one thing. This is a very, very, very serious issue. And you are a living organism, a human mind on this earth, and you are fully responsible for that. We all are actually. And we are not talking about the war, and we are doing all the gupshup of spiritual talks and all that. There's no meaning, no meaning at all. So if you are human, you are connected to all the wars on this earth to see all the genocides going on, not only in Gaza or whatever, but the basic issue is that it's a it's a power fight in the countries. So there are two things I say that the this is the requirement of the religious mind, or maybe standard of education, that it shows that a mind has to be totally clear about the war, and the reason and the actual reason is nationalism, to see that in full clarity. This is one thing. And the another thing is religious ideological division, and because of that, hatred. So that there is hatred, and there is violence, and there is massacre, genocide, all that is there, because we are talking spiritual talks, gupshup. We are these kind of people. Suppose if we are so sensitive, if the majority of human mind is so sensitive, can there be a war? No, it it will not there if we are such serious about the war. What is going on in our country? What is going on in our in our society, about all that all the division created in the name of religion? You are spreading hatred. So these are there, and you are not seeing that.
So I see that there is two poison in the world, which is two devils. The one is nationalism, and the another is hatred on the name of religion. These are two devils. And if the mind see that as a poison, if my mind see that as a poison, I will not go there. No matter how much other people are saying, no matter. If you have that clarity, there will never be a war. So this issue is very serious issue actually. And this in daily living, of course, Harshad Parekh always talk about the topic very well. So actually ना this is बहुत lethargic है कि दुनिया में जो हो रहा है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. This is एक lethargic way of seeing the things है. You are in a comfort zone and you're talking about spiritual शेर शायरी. It has no meaning. It's all all the sermons, all the whatever accumulated you have. Ravi, Like your point is valid. Ravi ji, your point is valid because Krishnamurti was hunkered down somewhere in so Europe. forget about Krishnamurti. There is no Krishnamurti. That There is is what. you and me. There is you and me, sir. There is you and me. And we are fully responsible for what is going on in this world. Fully responsible. So there's philosophical talk is also this अभी एक बात थी कि ना दुखाले का क्या करेंगे. अगर हम ऐसे दुखाले को देखेंगे, अगर उस दुख को जो हमारे भीतर है उसको मैं अगर इस दृष्टिकोण से देखूंगा, then what energy I have. See, it is to see the dukh in a naked form, that it is there without escaping. Then that is then and it's of course it's in awareness. It's all disidentification is the key to see the things without identifying with the things. But it is there. It is fact. It is the part of your life. It is your life. To say that दुखाले का क्या करेंगे, then you are not looking. So these are the things, sir, which I see, and I'm sorry if मैं थोड़ा सा I'm a bit blunt, but I'd like to do work on that. रवि जी, आपकी बात ठीक है. गालिब का एक शेर है ना, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, कब हस्ती का किससे हो जुजमर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक. तो who knows? पर ये ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि शम्मा जलती रहे जब तक जल रही है. समटाइम्स यू आस्क द क्वेश्चन व्हाई, तो उसका कोई इजी आंसर तो है नहीं. No. I'm in my why. In the very saying of why, I'm saying that to see, to look. Why it is there? First to see that it is there. यार इतना आसान होता तो क्या बात थी रवि जी. राह maybe I कठिन है can पनघट की. speak. Hmm? Yeah. राह कठिन है पनघट की सर. I think we can talk about the conflicts in relationship because that is Yes, what yes. creates war, right? So we can't stop the war between Israel and Iran. We are here in India, but we can stop the war which is within us, and that will be some contribution. So to stop the war, we have to stop the war within us in the form of Definitely. conflict. That is what Yes, we yes. are talking. That is what Krishnamurti's teachings are. Okay, I finish. I think maybe it's time now, 12:30, to stop, I think. It's nice talking to you, both of you, sir. Yeah. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you. So, Thank you, Somendra ji. We will have to end the meeting. Yeah.